served as National Nutrition Month, and Child Fund India has commemorated it with a campaign aptly titled as Local for Nutrition 2.2. The campaign has focused on promoting the role of good nutrition to prevent and manage infectious diseases. Today, we conclude the campaign by hosting this hour-long discussion. I would like to welcome and introduce our esteemed panelists for the session, who will deconstruct how nutrition and other innovative interventions and strategies can help India become TB-free. We'll start with Dr. Amar N. Shah, who is Project Management Specialist, Tuberculosis and Control at USAID India. Dr. Amar Shah's work focuses on patient-centric TB care, addressing social determinants of TB, treatment adherence, TB comorbidities, TB prevention, and the use of digital technologies in TB. Before joining USAID, he worked with WHO, German Leprosy and TB Relief Association, and at IIM Ahmedabad. Our second panelist for the day is Mr. Indraneel Chakrabarti, Senior Market Access Manager, Tuberculosis, and a public health expert from Viatris. Mr. Chakrabarti has demonstrated a history of working in the pharmaceutical industry. He has an MSc in Human Physiology from Calcutta University and a PGDM from Wellinkar School of Management, Mumbai. Our third panelist for the day, she's a Senior Specialist Health, Child Fund India. Pratibha Pandey brings with her over 16 years of diverse experience in the domains of maternal and child health, nutrition, reproductive and sexual health and rights, and social development. She has been serving Child Fund India as Senior Health Specialist for nearly 4 years now. Our fourth panelist for the day is Dr. Vikas Maurya, Director and Head of Department Pulmonology at Fortis Hospital, Shalimar Bagh, New Delhi. Dr. Vikas Maurya is an eminent pulmonologist and an alumni of Maulana Azad Medical College, New Delhi. He has more than 18 years of experience in respiratory medicine and interventional pulmonology with an impeccable academic credential. So before we start the discussion, I would request the audience to kindly share their questions in the Q&A chat box that you can see, and I will take the questions that you're sending up during my conversation with the panelists. As we begin the discussion, I would like to speak to you first, Dr. Shah. Dr. Shah, good evening to you. Good evening, and thank you so much for inviting me for this webinar. Thank you, Dr. Shah. Dr. Shah, WHO estimates that around 2.74 million people in India are infected with TB annually, and more than 410,000 people unfortunately die from the disease. Could you please help us understand the high prevalence of TB in our country? So thank you so much, Sarmisha, for asking this basic but very, very important question. Let's say when we see the facts and figures compared to the world's population, India is kind of contributing to 18% of the world's population. However, when we actually translate that to TB, 7% are globally because of the India. So India is always adding 27% of the global TB cases every year. And when we kind of try to compare that with the deaths, all global TB deaths, India is contributing to 35% of the deaths. So which is like disproportionate burden what India is facing. So हर किसी को ये आ रहा है कि why India alone have this disproportionate, इतना burden ज़्यादा क्यों है इंडिया में? And answer to this question is that TB is a prime example of the social disease. ये अकेला medical disease नहीं है, ये social disease है. और social disease के कुछ parameter होते हैं, जहाँ like it's not only treated through medical element, it requires social, it requires economic, and it requires environmental interventions. इस तीनों जगह पे आप ज़्यादा intervention along with the medical treatment जब करते हैं, then only you can kind of contribute. So for example, जब हम बात करते हैं TB की, तो overall जो cases हैं TB के, of that globally 27 are solely attributed to undernutrition. और जब इंडिया की बात करते हैं वो प्रतिशत बढ़ के up to 50% of the TB cases in India are due to undernutrition.
So that's a big factor. Similarly, diabetes contributes to almost 10 to 15% of TB cases in India. Smoking contributes to 10%. Then the air pollution, indoor air pollution contributes to 20% of TB cases in India. So that is huge factor where it's not about the predisposing factor, but these are the major economic factors. So and again, these factors, दो चीज करते हैं. It's not only increasing the chance of the getting the person TB disease, but also it adversely affects the treatment outcome. तो जिसको जिसको ये adversely भी इफेक्ट करता है. So दोनों तरह से बीमारी भी बढ़ाता है और जान भी ज्यादा लेता है. And in India now we can easily correlate that, like, we have higher prevalence of the undernutrition, we have air pollution, we are suffering with the lifestyle disorders. And so this is the reason why, in spite of best of the diagnostic, best of the treatment available for TB, we are not able to reciprocate that progress on the TB elimination. Still the burden is high. So this is major reason why we have more problem of TB in India. थैंक यू डॉक्टर शाह, ये बात हमें समझाने के लिए. जो आपने बात बोली कि टीबी एक मेडिकल डिजीज ही नहीं है, ये एक सोशल, इकोनॉमिकल एंड एनवायरमेंटल डिटर्मिनेंट से भी उसका बहुत फर्क पड़ता है. दिस इज एक्चुअली समथिंग दैट इज वेरी इंसाइटफुल फॉर ऑल ऑफ अस. मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे कि व्हाट आर द पिलर्स फॉर इंटीग्रेटेड केयर एंड प्रिवेंशन ऑफ ट्यूबरक्लोसिस इन इंडिया? Thank you, sir, Mr. So for any disease, in that sense, like we have like basic 4 kind of disease management strategy. We deal with 4 basic pillars. So उसमें एक detect आता है कि हर disease को जल्दी से जल्दी detect करना है, diagnose करना से ठीक से diagnose करना है, good technique से diagnose करना है. Second pillar is the treatment. So whoever we want to kind of identify as a disease, we want to treat them early and provide the complete treatment. Third pillar is the, of course, prevent. Prevention is a major pillar in that sense कि भाई पहले prevent कर लो तो आगे इतनी आपको diagnose और treatment करने की नौबत नहीं आएगी. But of course हम सब जानते हैं कि वो अभी वैक्सीन और ये सब भी उसके लिए चाहिए prevention को affect करने के लिए. Fourth होता है the build, which is kind of health system approach, where आप health system को इतना improvise करते हो that it actually gives the efficient and proficient kind of reply to this disease management. But because TB is a social disease, in addition to these basic 4 pillars, what we require is a commitment for all levels. Let's say it can be the political commitment from the civil organization, civil society organization, from the corporates, to address the upstream responsible factors, which we kind of discussed earlier. To tackle those factors, we need commitment. And second is we need intervention outside from the health sector. Traditionally, for any disease spectrum, we always see health sector as the responsible sector. But here we will require intervention from the outside from the health sector. Let's say specifically the social protection and the urban and tribal industry, also from the other corporates. So example is we can have more direct benefit transfers to the patients, to the family, have access to microfinance mechanisms, and training and skill development. So these are the one of the examples. But yeah, so TB will require the strategic intervention. Thanks, Dr. Shah, for explaining the 4 pillars of diagnosis, treatment, prevention, and strengthening healthcare system, and the commitment that is required from different stakeholder groups, including industries. USAID strongly emphasizes on the need for community connect and public advocacy. I think you've already touched upon that briefly, but could you explain how the same will catalyze the change in the healthcare system in our country? Right. No, thanks very much. So USAID works closely with many countries, governments, and other stakeholders to tackle the challenges of the TB. And इतने सारे देशों में काम करने के बाद जो हमें समझ आया है, that is what कि TB elimination or control is not the sole responsibility of the government. ये एक जवाबदारी है, as a responsible citizen,
every citizen has the responsibility and the way they can contribute individually or collectively to address some of the challenges which we are facing. And so one of the kind of example is that we need a people's movement, जिसको हम कहते हैं people's movement, and engaging the community in a very strategic way. Community को इतना तरह, like say we have some examples in past, पोलियो के जिस तरह से था, जिसमें like पूरी जनता साथ हो जाती है कि नहीं, ये पोलियो अगर इंडिया में है तो वो हमें कैसे चल सकता है. That's not acceptable. So I think that is what it will require. And once we get that, what we get the benefit is that because of that, we pull out all the resources in which is required for TB elimination. So वो एक resource pooling का भी काम करता है, and I think that is the way we can kind of improvise the health system efficiency and effectiveness. So वही USAID की philosophy, and which is what we closely work with the government of India on those principles. Thank you. Dr. Shah, for explaining how it cannot just be the responsibility of the government, but ये collective responsibility, एक people movement, एक मुहिम शुरू करने की जरूरत है, जैसे पोलियो में हुआ था, और एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी कनेक्ट करने की जरूरत है. एंड हमें बताने के लिए शुक्रिया कि यूएसएड कैसे गवर्नमेंट और बाकी स्टेक होल्डर ग्रुप्स के साथ काम करता है हेल्थ केयर सिस्टम्स को स्ट्रेंथन करने के लिए. ये क्यू लेके मैं आगे बढ़ना चाहूंगी डॉक्टर मौर्य की तरफ, जो फोर्टिस हॉस्पिटल शालीमार बाग से हैं. डॉक्टर मौर्य, जो नंबर ऑफ ड्रग रेजिस्टेंस टीबी केसेस आजकल बढ़ रहे हैं, how worrying is this situation for the larger healthcare ecosystem or for the country in general? Yeah, thanks, Vishta, and thank the Child Fund for inviting me. So I think it's a very important topic, tuberculosis, because if you see, if you ask my, post-graduation, my post-graduation was MD in TB and respiratory disease. So you can imagine, why it happens, in 50s or 60s, it was, they found that TB formed the major chunk of the infectious disease in India, and they started a post-graduation program in diploma as well as degree courses in the doctors who were graduating after MBBS. And now it is called as TB and respiratory is called as pulmonology and pulmonary medicine. So this is just, I'm saying the fact that TB is forms a major chunk of infectious disease in India. India is a developing country, and obviously, as well said by Dr. Shah, it's a socio-economic disease. And you can even imagine that even in a city like Delhi, even I see some few patients come to us and they cannot afford the TB medications, and so these patients, even because there are many people who live in Delhi without any Aadhaar card and without their migrant workers, and so there are many problems which are related to the TB, why it spreads, why population, huge, the economy, poverty, so much of things which are involved in the spread. And now with the TB as well, now we have the problem with us is that the MDR TB is also increasing. And if you see, about 500,000 new cases of TB or MDR TB were found, globally in 2019. I mean, we don't have data of 2020 and 2021 because of, COVID. And it was just COVID and COVID all over for last 2 years. And what suffered is the TB because the notification, the decrease, people not coming out with their symptoms, and they were staying indoors. So the delayed diagnosis and delayed, it has got a lot of problems, not only in the normal primary TB, but also in the MDR TB as well. And around, if you ask me about India again, 2019 data, we have around 124,000. That is 9.1 per lakh population having MDR TB cases. And the data again, if I go back, these things are very, very important. If you see the incidence every year, we have 1 lakh new MDR TB cases are being added. And if you ask me, the mortality is very, very high. Because the patient are not able to cover the whole treatment of MDR.
the treatment of MDR is very, very costly. It's very, very toxic. Though we have new guidelines coming in 2021, and with which we talk about not giving injectables and highly toxic drugs, and we're talking of oral MDR drugs. So again, we talk about that. It's a menace on the people, not only the primary TB but also with the MDR TB. So that's the way it's affecting, and I think we need more, as I said, well said, the involvement of the corporate, the involvement of the government, the leadership. Everybody has to take part. And now, if you know that now we don't have a control program, we have an elimination program. So it's a national tuberculosis elimination program, because we want that we should eliminate, at least eliminate in our country and from all over the world. थैंक यू डॉक्टर मौर्य अपना व्यक्तित्व इस बारे में समझाने के लिए। पीडियाट्रिक टीबी, बच्चों में टीबी के बारे में आप कुछ हमें बताना चाहेंगे? थोड़ा हमें जानकारी देंगे उस बारे में? बच्चों में जो टीबी होती है, जो हमने देखा है कि पहले तो ये होता है कि उनका डायग्नोसिस थोड़ा सा हमेशा दिक्कत होता है, डिलेड होता है, बच्चे अपने सिम्टम्स बता नहीं पाते हैं, और ऑब्वियसली नॉर्मली पहले से नॉर्मल खांसी जुकाम, ये नॉर्मल चीजें समझ के उसको यूज टू, इवन इसमें कोई पेरेंट्स की कोई गलती नहीं होती, बट ऑब्वियसली दे टेंड्स टू हैव मोर ऑफ सिम्टम्स। उनको बहुत ज्यादा खांसी जुकाम, वैसे भी इंडिया में हमने देखा है अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस आर वेरी कॉमन विद द चेंज ऑफ सीजन एंड एवरीथिंग, सो उनमें डायग्नोसिस में कई बार डिले। अगर हम बात करें ग्लोबली, इट इज वन ऑफ द 10 मेजर कॉज ऑफ मोर्टेलिटी अमंग चिल्ड्रन इन इंडिया, मतलब इन द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में 10वां ये मेजर कॉज है मोर्टेलिटी का। और अगर हम 2018 की बात करें तो अराउंड 11 लाख चिल्ड्रन बिकेम इल विद टीबी, एंड अराउंड 2,50,000 they died because of TB. So I think ये हमें समझना पड़ेगा कि टीबी जो है पीडियाट्रिक पॉपुलेशन में भी काफी इफेक्ट करती है, और अगर ठीक से इलाज ना हो तो काफी ज्यादा उसमें डेथ भी हो सकती है। और हम बात करें इंडिया की तो 2019 में 3,42,000 केसेस हम बात करें, हर साल मतलब इतने लगभग आते ही हैं, 3 लाख से ऊपर केसेस हर साल पीडियाट्रिक टीबी के आते हैं, which is around 31% of the global burden and 13% of overall इंडिया में टीबी का burden। मतलब अगर 100% टीबी केसेस है तो 13% उसमें से पीडियाट्रिक पॉपुलेशन के होते हैं इंडिया में। डॉक्टर मौर्य, आपने अभी बताया कि 14% जो केसेस होते हैं वो पीडियाट्रिक टीबी के होते हैं, पर अगर आप उस फैक्टर को मद्देनजर रखें तो उस हिसाब से अवेयरनेस अराउंड पीडियाट्रिक टीबी बहुत ही लो है। तो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए ताकि नॉट जस्ट सिस्टमैटिक चेंज आए, बट हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशंस, डिलीवरीज, हेल्थ केयर डिलीवरी सेंटर्स और लोगों में मास मोबिलाइजेशन, जागरूकता जारी हो, ताकि पीडियाट्रिक टीबी के बारे में थोड़ा ज्यादा पता चल सके हमको या जनरल पब्लिक? जैसे मैंने कहा कि टीबी जो है ये सोशियो इकोनॉमिक डिजीज है, तो हमें सबको सोशियो इकोनॉमिक जितने भी सोशल डिजीज होते हैं उसमें सबको मिलकर काम करना, गवर्नमेंट से लेकर गवर्नमेंट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, मैं बात करूँ स्टेट सेक्टर, लोकल लेवल पे, हेल्थ लेवल पे ही बात करें तो कहते हैं कॉर्पोरेट साहब, हर लोगों को इन्वॉल्व होकर इसमें करना होता है, मीडिया को भी इन्वॉल्व होना होता है, एनजीओ को भी इन्वॉल्व होता है, बिकॉज ये सोशल डिजीज है। हम सब ने मिलकर इसके लिए ये एलिमिनेट हो जाए इसके लिए काम करना है। चिल्ड्रन में क्या होता है कि जैसे मैंने बताया कि डिलेड डायग्नोसिस होता है, बच्चों में ज़्यादातर हम लोग सोचते नहीं है, बच्चों हम देखें अंडर न्यूट्रिशन इतना ज़्यादा है इंडिया में, जैसे डॉक्टर शाह ने बताया अराउंड 55% केसेस जो होते हैं इंडिया में दे आर एट्रीब्यूटेड टू अंडर न्यूट्रिशन टीबी। तो और ज़्यादातर हमने देखा है कि ये चिल्ड्रन में ज़्यादा देखा जाता है कि वो अंडर न्यूट्रिशन होते हैं और उनमें टीबी में ज़्यादा देखी जाती है। ऐसा नहीं एडल्ट में अंडर न्यूट्रिशन नहीं होता है, बट बच्चों के मामले में काफ़ी है। तो बच्चों के जो प्रोग्राम है, जो सारी चीज़ें जिससे इवन वैक्सीनेशन प्रोग्राम है या BCG जैसे हम लगाते हैं, तो सारी चीज़ों पे ध्यान देना बच्चों में। जैसे हमें पूरा का पूरा जैसे कोई भी सिम्टम्स आते हैं अपने, जैसे सबको अवेयरनेस करना है कि कैसे बच्चों में लक्षण आ सकते हैं, और उनको तुरंत जैसे प्राइमरी हेल्थ सेंटर में जा सकते हैं, या फिर कहते हैं आपके जो निकट जो चिकित्सक होते हैं वहाँ जा सकते हैं। तो जाके कुछ भी सिम्टम होते हैं बच्चों में, जैसे प्रेडोमिनेटली हमने देखा है जैसे छाती की टीबी, लंग टीबी कॉमन होती है, लेकिन साथ में गांठों वाली टीबी भी बहुत कॉमन होती है।
तो कोई भी चीज हो रही है, बच्चा अगर खा नहीं रहा है या ठीक से कहते हैं खाना पीना कम हो रहा है, वेट लॉस हो रहा है, तो इनमें बच्चों में हमें काफी ध्यान देना है कि इसमें टीबी हो सकती है। और हम सबको, जैसे मैंने बताया, सबको अगर मिलके अगर इसमें काम करते हैं, सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं, तो इसमें भी हम इससे पार पा सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर मौर्य, हमें ज़्यादा जानकारी देने के लिए इस बारे में। अभी काफ़ी रिपोर्ट सामने आ रही है कि कोविड के बाद नंबर ऑफ ट्यूबरक्लोसिस केसेस में बढ़ोतरी हुई है। आप इस बात से कितना सहमत है, आपका इस पे क्या विचार है? नहीं, ये तो हुआ ही है। वो लास्ट, जैसे फॉर एग्जांपल, आई एम कोविड स्पेशलिस्ट, आई एम कोविड इंचार्ज इन फोर्टिस शालीमार बाग, एंड आई एम ट्रीटिंग कोविड पेशेंट फॉर लास्ट 2 years। तो लास्ट 2 साल में हुआ क्या है कि कोविड के अलावा बाकी जितने भी डिजीज थे वो बैक बर्नर पे चले गए। लोगों में काफी ज्यादा ये रहा कि हम मतलब वो डर के मारे निकले नहीं, सिम्टम्स दिखाने, सिम्टम्स हुए तो फिर भी वो नहीं गए। कुछ कुछ को लगा कोविड है तो कोविड के टेस्ट कराए, लेकिन टीबी के टेस्ट नहीं हुए, डॉक्टर के पास नहीं जा पाए। और दूसरा कहते हैं, तो जैसे जैसे कोविड इनको लगा कि कम हो रहा है तब वो गए, तो उससे डायग्नोसिस में काफी डिले। अब जब डायग्नोसिस डिले होता है तो हम देखें, इंडिया एक बहुत ही ज्यादा पॉपुलस कंट्री है, हम लोग बहुत ही क्लोज रहते हैं एक दूसरे के। अगर एक को कहते हैं टीबी होती है तो दूसरे वो टीबी फैल जाती है। और वो छाती की टीबी है, बलगम वाली टीबी है, वो अगर निकाल रहा है, वो खांस रहा है कोई, तो वो जैसे कोविड फैलता है वैसे ये टीबी के जो ड्रॉप कीटाणु होते हैं वो भी ड्रॉपलेट्स के थ्रू फैलते हैं। इवन मेरे पास अब इस वक्त भी पेशेंट आ रहे हैं जो फैमिली के अंदर 2-2 मरीज पॉजिटिव हैं टीबी से। क्योंकि पहले हम इतने नहीं देखते थे। अब क्या हो रहा है कि फादर भी पॉजिटिव है, बेटा भी पॉजिटिव है, फिर हम देख रहे हैं तो जो ग्रैंड मदर है वो भी पॉजिटिव है। तो ये सब ऐसे हुआ कि सब लोग घर के अंदर ही रहे और आइसोलेशन में रहे, और डिलेड डायग्नोसिस हुआ, उससे वो फैली ज्यादा। तो कोविड के केस, तो डिलेड डायग्नोसिस कोविड की वजह से हमने काफी देखा। इनफैक्ट कहते हैं ये भी देखा गया कि जो WHO का डेटा वो कहता है कि 84 कंट्रीज में से अराउंड 1.4 मिलियन लेस पीपल को, 1.4 मिलियन लेस लोगों को टीबी केयर मिला 2020 में, जब उन्होंने कंपेयर किया 2019 में। मतलब केयर ही नहीं मिल पाया, वो लोग जा ही नहीं पाए, टीबी की दवाई नहीं खरीद पाए। मान लो दवाई ले रहे थे, वो जा भी नहीं पाए, या फॉलोअप नहीं कर पाए डॉक्टर से, तो उसमें भी उनमें दिक्कत आई। अब फॉलोअप नहीं किया, ठीक से दवाई नहीं ली, तो वही टीबी आपकी MDR ड्रग रेजिस्टेंट टीबी भी हो सकती है। और इसमें क्या हुआ, इससे एडिशनल, WHO तो ये कहता है कि इससे एडिशनल 500,000 टीबी डेथ्स हुई हैं। मतलब जितनी डेथ अगर हमारी 2019 में हुई थी, 2020 में 500,000 ज्यादा हुई है, बिकॉज टीबी हमारा केयर उतना नहीं हो पाया जितना होना चाहिए। इवन इंडिया की अगर हम बात करें तो जो नोटिफिकेशन में भी शॉर्टफॉल आया, काफी कंट्रीज में शॉर्टफॉल आया, इंडिया में भी 25% डिक्रीज हुआ नोटिफिकेशन 2022 में 2019 के मुकाबले। तो केयर तो टीबी की काफी इफेक्ट हुई है। इनफैक्ट मैंने देखा कि जो हम देख रहे हैं आसपास एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी काफी पेशेंट आ रहे हैं, निमोनिया टीबी के, लंग्स टीबी के काफी पेशेंट आ रहे हैं। तो इसमें एक ये तो है रहा ही है, लोगों को कोविड का डर इतना था कि वो घर से बाहर ही नहीं निकले, और उससे क्या हो, टीबी काफी ज्यादा फैली हुई। और दूसरा डिले ट्रीटमेंट हुआ, डिले डायग्नोसिस हुआ, ट्रीटमेंट वैसा नहीं हो पाया। तो ऑब्वियसली जब ऐसा होगा तो मोर्टेलिटी तो बढ़ेगी बढ़ेगी। तो कोविड ने एक काफी उससे हम देखें तो कोविड में तो हर चीज को इफेक्ट किया। हम यहाँ टीबी की बात कर रहे हैं, दूसरी बात नहीं छेड़ना चाहता हूँ, बट काफी सारी बीमारियां भी उससे, दूसरी बीमारियां भी अफेक्टेड हुई है। इवन कैंसर भी इफेक्ट हुआ, तो बहुत सारी बीमारियां इफेक्ट हुई है। लेकिन हम बात करें टीबी की, बिकॉज टीबी हम बात कर रहे हैं, तो बहुत ही मेजर तरीके से कोविड की वजह से टीबी इफेक्ट हुआ। इवन कहते हैं जो सोशल सेक्टर है, जैसे मतलब प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, आंगनवाड़ी कहते हैं वर्कर है, वो घर पे जाके पहले जैसे जाते थे, पूछते थे टीबी के मरीजों से, दवाई नहीं ली, वो भी नहीं जा पाए टीबी की वजह से। तो हर सेक्टर इफेक्ट हुआ। इवन कहते हैं हम बात करें एनजीओ इफेक्ट हुए, सब लोग इफेक्ट हुए। तो जो मरीजों का जो ध्यान पहले रखा जा रहा था कि आप फोन करके उनसे पूछते थे दवाई खा रहे हैं नहीं खा रहे हैं, इवन कहते हैं उनसे घर जा जाके भी पूछते थे, जबरदस्ती उनको कहते थे भाई आओ अपना टेस्ट कराओ, कुछ और ना, तो वो चीजें सारी इफेक्ट हुई। तो इस तरह से टीबी केयर तो बहुत इफेक्ट हुआ कोविड की वजह से। Dr. Maurya, there's a question from Kranti Kumari. She's asking if pediatric TB is related to parent, as in can it be communicated from a mother to a child?
नहीं, देखिए जैसे मैंने कहा कि ऐसे नहीं होता कि यार जैसे अगर माँ प्रेग्नेंट है तो माँ को टीबी होती है तो बच्चे को जाएगा, ऐसा नहीं होता है। लेकिन कहते हैं अगर हम बात करें, हाँ अगर कहते हैं किसी को बलगम वाली टीबी है, छाती की टीबी है और उसके बलगम में कीटाणु है टीबी का, तो वो तो घर में किसी को भी हो सकता है। अगर मान लो बच्चा है तो बच्चे को भी हो सकता है, या कहते हैं कोई और एल्डरली है, जो कोई भी जिसकी इम्यूनिटी कम होगी किसी भी वजह से, उसमें वो टीबी का इन्फेक्शन डिजीज बन सकता है ना। हमारे देश में टीबी इतनी है कि हम लोग सबके सब कभी ना कभी तो किसी ना किसी कीटाणु से, टीबी कीटाणु से एक्सपोज होते ही है, बट हमारी इम्यूनिटी अच्छी होती है कि हमारे से वो डिजीज नहीं बन पाती। तो अगेन वही इंपॉर्टेंट होता है, इसीलिए हम अंडर न्यूट्रिशन की बात इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है कि अगर आपकी न्यूट्रिशन अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, तो आपका जो इन्फेक्शन भी टीबी डिजीज नहीं बनेगा। तो इसलिए घर में अगर किसी को टीबी है तो अगर आपको ये ध्यान रखना है कि वो टीबी दूसरे को हो सकती है। अगर वो छाती की टीबी है, फैलने वाली टीबी है, वो बलगम में आ रही है, तो फिर तो वो किसी को भी हो सकती है। थैंक यू डॉक्टर मौर्य आपकी जानकारी के लिए। और भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, बट टाइम की सेंसिटिविटी को ध्यान में रखते हुए आई विल मूव ऑन टू मिस प्रतिभा पांडे, जो सीनियर स्पेशलिस्ट चाइल्ड फंड में है। मिस पांडे, I have a question for you. Could you tell us a little bit about the work that Child Fund India is doing in the area of TB control at the moment? Thank you, sir, Mr. for this. As you know, Child Fund, we work in 15 states and we work in more than 56 locations. And in health, we are working in like many communicable diseases, and TB is one of it. So if we look at how we, in tuberculosis mainly, we the other NGOs they do, we are doing community awareness, and actually we are taking two approaches. One is working with the community structures and processes and making people aware and behavior change part of it, and also the drug adherence part, relapse and all, which are linked to behavior change, we are doing at one hand. And on the another hand, working with the national tuberculosis elimination program, state TB elimination program, so that the service delivery part can be addressed. So it's the both side, from one from the community side and another from the government side. The unique thing which we are doing is that because our presence in very remote locations, and we are seeing that most of the patients are malnourished, and because TB is not getting eradicated, because it has become a vicious cycle. A person recovers and again he has TB or relapse, we say is. And we are addressing the nutritional need also. Like a person who is affected with TB should have a good nutrition so that the treatment is successful and the person doesn't have relapse once the treatment is completed. And it goes overall like over improving the functionality of the person. So I feel that most of the NGOs who are working on TB and should also look into these underlying causes, and nutrition is one of the most important factor which needs to be there in TB elimination program. Though it's there are guidelines from WHO and in our India also to include nutrition support, supplementation, and counseling in for the TB patient. But not much we have done is, and I think only the Child Fund is only the pioneer in doing this nutrition support program for tuberculosis. थैंक यू मिस पांडे, हमें जानकारी देने के लिए कि चाइल्ड फंड क्या काम कर रहा है, क्या इंटरवेंशंस हैं उनके टीबी के अराउंड। से डॉक्टर शाह ने अपने डिस्कशन में बताया था और आपने भी बोला और डॉक्टर मौर्य ने भी बात बोली कि ये सिर्फ एक मेडिकल डिजीज नहीं है, ये एक सोशल, एनवायरमेंटल एंड ओवरऑल सब चीज़ों का इम्पैक्ट है। बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन के बारे में आपने बात करी, कुछ आप बताना चाहेंगे? व्हाट इज द रियल रोल ऑफ बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशंस, not just to strengthen the communities and create more awareness, but for mass mobilization and also for securing commitment from different stakeholder groups? अगर आप हमें कुछ अपने insights share करें इस बारे में।
टीवी में सबका पार्टिसिपेशन, सो सबका में मेन जो ये 3 पिलर्स हैं, कम्युनिटी, प्राइवेट, गवर्नमेंट, एंड हम डेवलपमेंट सेक्टर एनजीओस तो हैं ही जो इन तीनों पिलर्स को जोड़ते हैं। तीनों का जब पार्टिसिपेशन होगा तभी हम टीवी को एलिमिनेट कर पाएंगे। जैसे डॉक्टर अमन ने पहले पोलियो एरेडिकेशन प्रोग्राम की बात की थी, तो उसमें भी ये तीनों पिलर्स साथ आए थे, तब हम पोलियो को एरेडिकेट कर पाए थे। सिमिलरली ये टीवी प्रोग्राम के साथ भी चलता है। तो बिहेवियर चेंज पार्ट में मास अवेयरनेस एक चीज हो गया कि टीवी पे हम बोल रहे हैं या न्यूज़पेपर्स में निकाल रहे हैं, लेकिन जो मेन चीज मुझे ऐसा लगता है कि जो हम अपने प्रोजेक्ट में कर रहे हैं, टीवी प्रोजेक्ट्स में, कि होम विजिट, क्योंकि हर टीवी पेशेंट एक जैसा नहीं होता है। तो अगर एक गांव में 4 टीवी पेशेंट हैं तो एक उसमें से प्रेग्नेंट हो सकती है, एक बच्चा हो सकता है, एक बड़ा हो सकता है। तो टेलर्ड मैसेजिंग बहुत जरूरी है, क्योंकि एक आम जब हम मैसेजिंग करते हैं तो कहते हैं कि टीवी की दवाई पूरा खत्म करनी चाहिए, बीच में नहीं छोड़नी चाहिए, मगर अगर हम उस पेशेंट के पास जाकर उसको टेलर्ड वे में उसकी काउंसलिंग करते हैं कि उसकी नीड क्या है, क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्योंकि ये दवाइयां हर लोगों पे अलग अलग असर कर सकती है। और दूसरा ये है कि उसके सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन है। हम कह रहे हैं कि तुम ये जो है अच्छा न्यूट्रिशन लो, बट क्या उसको वाकई में न्यूट्रिशन की समझ है, क्या उसको पता है कि उसके वो कैसे ठीक होगा, क्योंकि बच्चे के साथ टीबी जैसा बताया उसका अलग है तरीका और बड़े के लिए अलग है। तो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन में मुझे मेन रोल लगता है कि हाउस टू हाउस विजिट और इंटरपर्सनल काउंसलिंग पे अगर हम फोकस करें, साथ में जो वहां पे टीवी चैंपियंस हैं उनको खड़ा करें, उनको एज ए रोल मॉडल बनाए, जो कि कम्युनिटी में ही होते हैं, जो ठीक हो गए हैं और अपनी बात जो है लोगों तक पहुंचाए। तो एक पॉजिटिव ग्रुप बनता है, क्योंकि टीवी का नाम सुनते ही अब तो शायद थोड़ा लोग कम डर रहे हैं, मगर आज से 20 साल पहले तो लोग बहुत ज्यादा डरते थे, लेकिन वो अभी भी चल रहा है लोगों के दिमाग में। तो वो एक एम्बेसडर, टीवी चैंपियन या टीवी एम्बेसडर्स की हम बात करें, इसके साथ दूसरे जो इन्फ्लुएंशियल लीडर्स जो कम्युनिटी में हैं, जिनकी बात लोग ज्यादातर मानते हैं, उनके थ्रू हम जाएं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और प्राइवेट का सेक्टर का एंगेजमेंट इसमें बहुत जरूरी है कि वो इनोवेटिव मॉडल्स लेकर आए, नए नए तरीके हमको लेके आए, क्योंकि सिर्फ ये गवर्नमेंट और कम्युनिटी की से ही हल नहीं होगा। प्राइवेट, कम्युनिटी, गवर्नमेंट और साथ में हम लोग जो डेवलपमेंट सेक्टर वाले लोग हैं, सब मिलके करेंगे तो ही टीवी को हम एरेडिकेट कर पाएंगे, जो कि हमारा गोल है। Thank you, Ms. Pandey. Would you like to talk a little bit about innovative financing, कि उसके क्या क्या मॉडल्स हैं और अगर आप उसका क्या इम्पैक्ट रहा है सो फार, और फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ ट्यूबरकुलोसिस अगर कोई एग्जांपल आप हमारे साथ शेयर कर सके। इनोवेटिव फाइनेंशियल जो है ये एक अलग तरह का अप्रोच है, जिसमें कि पेमेंट जो कि कमिटमेंट के साथ आता है, कि जैसे डिफरेंट दूसरे ग्रांट्स होते हैं उसमें एक अलॉटेड उसमें भी आउटकम होते, ये इम्पैक्ट इसमें एक फिक्स इम्पैक्ट होता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं टीवी का जो हमने किया, हमने इनोवेटिव फाइनेंसिंग दूसरे सेक्टर्स में भी हुआ है, जो कि एक नया तरीका है और वर्ल्ड इसको अभी एक्सप्लोर कर रहा है कि कैसे हम इसको स्केल करें, इसका क्या फायदा है। तो उसमें ये है कि आउटपुट जो है वो फिक्स होता है। जैसे कि हमने फिक्स किया कि अगर वो टीबी पेशेंट का 6 किलो वजन बढ़ जाएगा और उसका ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाएगा, सक्सेस होगा, ट्रीटमेंट सक्सेस होगा, तभी जो है उसका पेमेंट जो उसको इम्प्लीमेंट कर रहा है उसको उसका मिलता है। तो पे फॉर परफॉर्मेंस, यानी कि हम परफॉर्म करेंगे तभी उसका पेमेंट होगा। तो इसमें थोड़ा तो ये रिजल्ट बेस्ड अप्रोच है, ऐसा नहीं कि सिर्फ ग्रांट दे दिया है और काम चल रहा है। इसमें अकाउंटेबिलिटी भी होती है, बिकॉज फाइनेंस आपको रिइंबर्समेंट तभी मिलेगा जब ये होगा। और प्राइवेट सेक्टर इंटरप्राइजेस जो हैं, जो प्राइवेट हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छा मॉडल है, बिकॉज जो वो इन्वेस्ट करेंगे उसके बदले उनको इम्पैक्ट भी देखने को मिलेगा। सो ये इस तरह का मॉडल है।
Thank you, Pratibha ji. आपके insights around the role of technology, behavior change, communication, नए innovative financing instruments के बारे में हमें बताने के लिए, and most importantly, the role of the entire spectrum, not just the government, but also the private sector and the industries at large. इससे क्यों लेते हुए मैं बात करना चाहूंगी मिस्टर चक्रवर्ती से, जो आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं वाया त्रिस से. मिस्टर चक्रवर्ती, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग rather. Thank you, Sharmishna. Thank you, all speakers. And this fantastic session and driving this session towards this end goal of elimination of TB. I feel this is the time to discuss that we have committed certain things through Central TB Board in 2015 in National Strategic Plan. And now we have already 5 years complete, and now on another 5 years we need to eliminate TB. So this is the goal of the organization. So here I just want to say first thing, what is the definition of elimination as per the National Strategic Plan? First, we need to understand that the definition of strategic plan is based on the 4 things. That is the end goal. The end goal is the TB incidence, which is 217 per lakh population, that must go down to 44 by 2025. TB prevalence, which is 320 at present, that in 2000, not at present, in 2015, that must go down to 65 by 2025. Mortality, which was 32 in 2015 per 1 lakh population, that must go down to 3. And catastrophic cost, that must be, at present it is 35, means in 2015 it was 35, and it must be 0 by the end of 2025. So entire National Strategic Plan goal is based on these 4 things. So at the end of it, we are going to achieve this. So once the end goal is there in place, now National Strategic Plan divided these 4 things into 4 pillars, which Dr. Amar has rightly mentioned, based on build, prevent, treat, and detect. Now understand the progress in last 4-5 years. After our Honorable Prime Ministers announced that we will be eliminating TB 5 years before the SDG, Sustainable Development Goal. After that, the things have speeded up further. And we have seen in 2020, there was a revised national NSP has come up, mentioning the budgetary, what is the budget, dividing the NSP into 4 pieces. So now if we look back, what is the progress in all those 4 front, build, prevent, treat, and detect. Let's understand, I'll start from the prevention. India has started giving access to a newer drug. We have seen that newer drug like government have introduced rifampicin, which is largely in our prevention of the people who are already have a TB and their family members. They have started in a shorter scale, but I am 100% sure they are going to scale it up. Treatment, we have seen there is a lot of progress. Government have done given access of newer drug like bedaquiline, delamanid. Some new drugs they are going to come up with in a trial mode, and in future they are going to speeden up. And if we see the reports published by the Central TB, there is a substantial increase in the treatment outcome also. Using the newer drugs, they have earlier it was 56% MDR treatment success rate, gone up more than to 80% of treatment success rate. Detection is the key area, because the early detection is the key for the success of the treatment. We have seen there is a
CBNAT, we call like the NAT-based testing, which confirms that patient is resistant to rifampicin or not. There is government has a plan to increase up to 8,000 machine by 2023. So now we have already crossed 3,000. So government is towards that in right path. Yes, that is 100% sure. COVID has impacted in a larger way of the access of the medicine. But for that, there are certain steps also government have taken. So things are in place. I missed that last point of building it, the things that build, which is the fourth pillar. In build, we have seen that government increase the nodal centers. At present, government have already going to give access to more than 500 hospitals, which is like as a nodal center for DRTB treatment. So I feel as an organization, as a central TB department, as well as government, as a organizations in right in track in NSP, and together it is not, as Dr. Amar mentioned, it is not only a organization like central TB department goal. It should be the country's mission. All of us, all 4 people you have invited in 4 different sectors. All 4 of us still we have a resolution to eliminate TB. It's not possible for central TB department or any country to eliminate TB by 2025. I'm not representing the organization of Beatrice, which you have mentioned in my introduction. At present, it is in personal capacity. I am participating in this. Yeah. Noted. Stand corrected for that, Mr. Chakravarti. There's a question from Deepankar Das. He's asking, how can government policy help innovating finance succeed? Your views on that? So, health innovation finance access government policies at present, I feel union and I think Ms. Pratibha can talk more about this, because I have seen in this financing thing, innovative financing piece, largely used in Rajasthan in Anemia Mukta Bharat long back. I feel that time it was in a lower scale. अभी उसको शायद और भी ज़्यादा बड़े पैमाने पे they are going to use. मुझे exact scaling up, but I know that many organizations like Union, I don't know, Child Fund also, maybe you guys are working in this direction. So we as a India, also the private sectors, we obviously come up with those kind of things where there should be a milestone to achieve as far as the financing is there. Thank you. Thanks, Mr. Chakravarti, for answering that question. There's another question from Natasha. She's asking, what can civil society organizations and corporations do together and differently than what they are currently doing to address the current government's TB elimination program? So understand, this is good questions. I feel the community, the advocacy is very important area. Social advocacy is very, as I'll take a cue which Dr. Amar said, it's not only disease, it is more of a social stigma. So community, corporations can play a pivotal role to mobilize the social understanding of the disease. It's more of a disease of the community where people feel that, yes, this disease is like an end of life. It's just a simple disease that needs to be communicated to 1.3 billion people of India, and which is not an easy task. Yes, completely agree with you on that, Mr. Chakravarti. There's a need for a collaborative approach, and hence there's a need for different stakeholders to come together to TB elimination program. There is one more question that I have from the audience, is which you have sort of addressed already, but then if you could re-emphasize on the role of technology in prevention
in detection and in improving access to treatment and care for tuberculosis, and how it could be further enhanced, and what kind of cross-industry collaborations that one can look at to make this much, much better and amplify the reach. Very large and wide questions, to be very frank, but it needs the entire session to be discussed. But yes, in short, I just try to give where we are at present. So I feel technological advancement is the area, and the requirement of that technology embracement at the government level or at the country level is already has been already started. We have seen one nice step which government have taken already is 1.5 years back. There is a NDHM, National Digital Health Mission, a specific body who is going to create the EHR system, electronic health record system of entire country. There are many other areas. Now, when we have started these things, the COVID, which has pushed this technology thing in a you can say in a double the speed. Now we have seen people know what is telemedicine, people know what is teleradiology. AI-based detections is one important area, which we have seen that Central TB Division, as well as the state like Maharashtra, which has a higher burden of disease, particularly for tuberculosis, have already adopted all those things in technologies. Yes, one for a larger organizations or larger drug providers, they have a bigger role to play to handhold smaller organizations which have an excellent, unique technological platform. But yes, there is they are not able to scale it up. Larger organization can collaborate and take those solutions for the bigger interest of the community to the Central TB division. That these are all the solutions where government can pitch it. But yes, one important piece is we are still slow in embracing the technology and to expanding the access of the technology in India at present. Thank you. I'm sure it will go fast further. There are sensors, wearables, all those things coming up, and obviously it will go further. Yeah. Thank you, Mr. Chakravarti, for your insightful views on the role of AI and technology in general for improving access to treatment care. There's a question for Dr. Shah. The question is, Dr. Shah, the question is that India is a huge country and there seems to be a wide geographical variation with respect to TB burden and its trends. There's a severe local outbreak which is hidden behind an inadequate data and surveillance system. How do you think this can be addressed? Thanks, Pratibha. And I think this is an important question. Overall, yes, this is a issue of overall building the resilient and efficient health system. And of course, no country is perfect. It's not only about the India. And COVID has shown that like each and a country is grappling with the numbers, right? So, and disease is also evolving. Let's say we need to be very kind of frank here that like similar to COVID, TB is also one of the enigmatic disease where you have heard about the drug resistant TB, the newer strains, and we are lacking the so there is an improvement overall. Let's say I just give you the example one where Government of India has kind of initiated one of its largest national TB prevalence survey. So this is one way where we are trying to improve or judge the situation of TB, what is happening in India, through which we can kind of try out what are the pockets in India. Second, I think collaboratively, let's say Government of India is doing it, and there is also exercise where the entire missionary is involved to see the latest situation of TB, let's say specifically for after post-COVID situation. So these are the approaches there from the Government of India currently. Also,
Now there is a greater science, and I think there was a question on technology, and definitely health sector is one where we are not kind of leveraging the technology so much. But now there are tools and illumination available here. Let's say for the improving the surveillance. Now we know the risk factors related to TB, that there are indoor air pollution, the undernutrition, and we also know about the other factors. So now with the use of technology, artificial intelligence, we can super layer all these risk factor on the basic premises of our programmatic data of notification, under notification, and the clustering effect. We, under the National TB program, what we are capturing is a case-based recording and reporting system, which is called as Nikshay. And just to, for our viewers, like the size of the data when we speak, it is more than 6 million, meaning 60 lakh people का data हमारे पास available है TB patient का, कि और पुराने साइंस से 2010 से हमारे पास है. तो वी डू हैव दैट इंफॉर्मेशन कि कितने लोगों को टीबी हुआ था, उसमें से कितने लोग अच्छे हो गए, उसमें से भी वापस कितने की बार वापस हुआ है. तो डेटा इंटेलिजेंस डे बाय डे हमारा बहुत इंप्रूव हो रहा है. ऑफ कोर्स वी आर स्टिल नॉट परफेक्ट, देयर इज अ रूम टू फर्दर इम्प्रूवाइज, एंड वही है कि जो इतने सारी संस्थाएं जुड़ रही हैं, टेक्नोलॉजी वाली संस्थाएं हैं, वो अपना काम करके इसमें फर्दर इम्प्रूवाइज कर सकती है. बट again, there are identified pockets now. So government of India, state government also have identified few pockets, और वो उसी का यूज करके they have started campaign called active case finding और intensified case finding drives. तो वो डेटा हम यूज करके वो भी शुरू कर रहे हैं, और USAID जैसी संस्था है उसमें सरकार का भरपूर सहयोग करने के लिए ट्राई कर रहे हैं. हम अपनी ओर से भी, हमारे जो साथ जो दूसरी संस्थाएं जुड़ी हैं, वो सारे इंप्रूव करने के लिए कर रहे हैं. तो आई थिंक वी आर गेटिंग बेटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑन द टीबी. बट यस, ये कांस्टेंट सर्वेलेंस है, तो वो ये कांस्टेंट एफर्ट रहना है. और कोविड जैसी सिचुएशन अभी जो सर ने बताया, जस्ट बिकॉज ऑफ द कोविड इट हैज इम्पैक्टेड द टीबी एपिडेमियोलॉजी. तो ये एक डायनेमिक्स है और वो थैंक यू. थैंक यू डॉक्टर शाह. नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हमको ऑडियंस से आ रहा है डॉक्टर विकास मौर्य के लिए. सर, आपके लिए क्वेश्चन है कि पीडियाट्रिक टीबी का अप्रोच जो है, हाउ कैन इट बी डिफरेंट फ्रॉम अडल्ट टीबीज अप्रोच, और इसको कंट्री लेवल पे हम कैसे एड्रेस कर सकते? सर, आप म्यूट पे हैं. हाँ, तो जैसे मैंने कहा कि जैसे हमारा जो नेशनल ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम है, वो पूरा का पूरा एडल्ट और एक चिल्ड्रन एस्पेक्ट दोनों ही देखता है. और जैसे मैंने बताया कि जो चिल्ड्रन होते हैं उनके जो सिम्टम्स होते हैं वो हमारे थोड़े डिफरेंट होते हैं एडल्ट से इन टर्म्स, बिकॉज उनमें पहले तो हमें पहचानना होता है कि उनमें जो प्रेजेंटेशंस होती है, ज़्यादातर जो होते हैं इनमें बच्चों में एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी के केसेस भी जैसे ज़्यादा होते हैं, तो हमें उसकी अवेयरनेस होनी चाहिए. और इनमें जैसे सबका रोल आ जाता है इसके अंदर, गवर्नमेंट का रोल, और साथ में कहते हैं जो उनके जो पीडियाट्रिशियंस होते हैं जिनमें जाके वो वैक्सीनेशन प्रोग्राम जिसके अंदर उनका चलता है, जब वो जाते हैं तो उसमें सारी चीज़ें जो होती हैं वहाँ पे सिम्टम्स वगैरह जो होते हैं सारे पूछे जाने चाहिए. पूरा पेशेंट को एग्जामिन पूरा ढंग से, जैसे ज़्यादातर जो होती हैं गर्दन के अंदर जो गांठें आ जाती हैं जो कि बड़ी कॉमन हमने देखी हैं कहते हैं बच्चों में, और बच्चों में जैसे जो टीबी जो लंग्स वाली जो टीबी होती है, तो इनके जैसे खांसी वगैरह हो रही है, सारे बच्चों में अगर ये हमें सिम्टम ध्यान रखने हैं बच्चों के एग्जाम जो पीडियाट्रिक पॉपुलेशन है, जैसे हमारा जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम है उसके तहत जो बच्चे जाते हैं हर बार, तो उसके तहत हम उनको एग्जामिन करते हैं. तो यही चीज होती है जो पूरे जैसे सेंट्रल लेवल पे जैसे हमें ये हमें ध्यान रखना है बच्चों का कि सिम्टम्स का जो उनमें के अंदर नॉर्मल पल्मोनरी टीबी के अलावा जो एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी होती है वो भी उनमें हो सकती है. और बच्चों में अगर पेट के भी सिम्टम्स हैं, कुछ हो रहे हैं, दिक्कत हो रही है, खाने में दिक्कत हो रही है, खाना नहीं खा रहे हैं, वेट लॉस हो रहा है, उनको भूख कम लग रही है, तो ये लक्षण भी हमें पहचानने होते हैं बच्चों में कि बच्चों के अंदर टीबी तो कहीं नहीं है. तो यही चीजें हमें सेंट्रल लेवल पे हमें ले जानी होती है, जैसा कि जो भी ऑलरेडी हो रहा है. तो ऐसा नहीं है कि वो नहीं है, इस वक्त ऑलरेडी चल रहा है. जो हमारे जो प्रोग्राम्स है उसमें बाकायदा इसमें का भी ध्यान रखा जा रहा है. और जैसा बस ये है कि हमें बच्चों को जो टीबी ऑब्वियसली थोड़ा सा टाइम लगता है उन्हें डायग्नोज करने में,
बच्चे अगर दवाई लेते हैं तो उनमें रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा आता है। तो बच्चों की टीबी का रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा रहता है। तो यही चीज़ हमने हर लेवल पे, मतलब लोकल लेवल पे और कहते हैं सेंट्रल लेवल पे हमने अपने करनी है। तो सरकार में जैसे हम देख रहे हैं कि जितना भी सरकार इसे काफ़ी ज़्यादा उन्होंने एलिमिनेशन प्रोग्राम पे, जैसे हम कह रहे हैं कि वो फोकस कर रही हैं, तो इसमें उन्होंने काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हुए हैं, हर लेवल पे इन्वॉल्वमेंट हुई है। जैसे हम बता रहे हैं, जैसे हेल्थ मिशन भी कहते हैं जुड़ने जा रहा है, जिसमें हमारे हर केस बेस्ड, जैसे अभी डॉक्टर शाह ने बताई, केस बेस्ड हम वो करते हैं, उनको डेटा रखते हैं। तो हर चीज लेवल पे चिल्ड्रन का भी रखा जा रहा है और उनका फॉलोअप किया जा रहा है। थैंक यू डॉक्टर मौर्य। एक और क्वेश्चन है आपके लिए क्रांति कुमारी जी से। द क्वेश्चन इज ब्रेन टीबी आल्सो रिलेटेड टू न्यूट्रिशन? टीबी चाहे कोई भी हो, टीबी जो है, जैसे हमने कहा है कि जो इंडिया में 55% केसेस हैं वो अंडर न्यूट्रिशन से एट्रीब्यूटेड है टीबी के लिए। अब अगर हमें टीबी होती है तो टीबी, जैसे हमें पता है, टीबी का कीटाणु जो होता है वो हमारे मुंह के द्वारा, जैसे हमने देखा था कोविड में, वो हमें जाता है मुंह से, नाक से जाता है। ज़्यादा जब भी जाता है तो हमारे जो प्राइमरी डिफेंस मैकेनिज्म होता है, ये हमारे कहते हैं जो लिम्फेटिक सिस्टम जो हम कहते हैं, वो हमें इसको रोक लेता है। ये कई लोगों में जिनमें इम्यूनिटी कम होती है, जैसे हमने देखा, जैसे बच्चों के अंदर कई बार ये बीसीजी वैक्सीन नहीं लगी होती, जैसे बीसीजी वैक्सीन है, वो हमारा कहते हैं स्प्रेड आउट, मतलब जो टीबी जो फैलने वाली टीबी है उसको रोकता है। ये इवन कहते हैं, तो अगर हमारी इम्यूनिटी कम होगी, हमारी अगर इम्यूनिटी अच्छी नहीं होगी, और अगर हमें, जैसे बच्चों में खासकर देखा गया है कि उनको अगर बीसीजी वैक्सीन नहीं लगी तो उनमें टीबी बड़ी जल्दी स्प्रेड आउट हो जाती है और वो आपकी ब्रेन टीबी भी इन्वॉल्व हो सकती है। तो बहुत, तो अंडर न्यूट्रिशन तो ऑब्वियसली एक कारण है कि आपकी इम्यूनिटी लो होने का, और आपका जो बीमारी है जिसे हम कहते हैं डिसेमिनेटेड टीबी हो गई, मतलब टीबी आपके फेफड़ों से निकल के और आपके ब्लड के थ्रू, लिम्फेटिक सिस्टम के थ्रू आपकी बॉडी में फैल गई, वो आपके कहते हैं ब्रेन में भी जा सकती है। तो अंडर न्यूट्रिशन तो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है ही इसके अंदर, कि हमारे टीबी का फैलने का और हमारे ब्रेन में जाने का। थैंक यू डॉक्टर मौर्य। जो अगला क्वेश्चन है वो प्रतिभा पांडे के लिए है। प्रतिभा जी, क्वेश्चन है कि कोविड के दौरान इम्पैक्ट बॉन्ड ऑन टीबी कितना सक्सेसफुल रहा है? कुड यू शेड लाइट ऑन दैट प्लीज? सो कोविड के दौरान टीवी इम्पैक्ट बॉन्ड बहुत ही सक्सेसफुल रहा है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि ये आउटकम बेस्ड है। तो कोविड के दौरान जब लॉकडाउन भी था तो भी हमारा प्रोजेक्ट, जो हमारी टीम थी, वो स्पेशल परमिशंस लेकर वो पेशेंट्स के पास जा रहे थे और उनको फूड बास्केट्स दे रहे थे, जो सप्लीमेंटेशन न्यूट्रिशन है, इसके अलावा काउंसलिंग कर रहे थे और उनको हॉस्पिटल तक पहुंचा रहे थे। जैसे पहले डॉक्टर विकास और अमर ने कहा है कि लोग जाने के लिए हेजिटेंट थे, तो वो चीजें हम कम्युनिटी में जाके, क्योंकि उनसे मिल रहे थे, तो उसको कर रहे थे। सो अगर रिजल्ट हम देखें, जो हमने 1000 पेशेंट्स को के साथ काम किया पूरे इस कोविड के दौरान, तो उसमें 95% ऐसे थे जिनका की ट्रीटमेंट सक्सेस था, और मोर देन 85% ऐसे जो पेशेंट थे उनका 6 से 8 किलो वजन गेन हुआ है। तो इट्स कंप्लीटली सक्सेसफुल, यही हमारा टारगेट भी था। थैंक यू प्रतिभा जी, अपना व्यक्तित्व हमें बताने के लिए। With this, we have come to the end of today's session. I would like to thank Dr. Shah, Dr. Maurya, Mr. Chakravarti, and Ms. Pandey for your time and for the useful insights that you shared with all of us. I personally have a lot of takeaways from the discussion, and I'm sure people who logged in to be a part of the webinar would also have some key takeaways, and I hope the overall program on TB further gets strengthened. Thank you for the fruitful and informative discussion. I think from today's discussion, it is clear that multi-stakeholder interventions, tech-enabled services, and social mobilization are key to addressing India's TB burden, and most effective when applied together. Only then do they provide a cross-cutting supporting strategy that focuses on all aspects of TB care for ensuring quality in diagnosis and treatment interventions, thereby strengthening social support systems for TB care and community interventions and reducing stigma. Thank you so much for joining the discussion. Thank you. Thank you. Thank you.